The first student who will come and share her experience is Saipriya Mahapatra. A very good morning to all of you, all respected teachers, the dignitaries and my dear brothers and sisters present over here. Today we are calling it a blessing ceremony because after a short period of time we are going to appear our exams. Thus the blessings of our teachers and our guest is very necessary. Respected teachers, I want to say a few lines to you. You occupy a very high status in our life. Every student would always remember your dedication and your work that you have done for our support and guidance from our teachers who helped us to become better students and individuals. To our friends, thank you for the laughter and the memories and for always being there for each other. We will miss this school, but it is actually not a goodbye. We are just saying goodbye to our school life as we are going to enter into our college life ahead of the board exam. Thus, it is not a farewell, it is a blessing ceremony. Varsha Priyadarshini Das from class 10 to share her experience. Good afternoon to all of you, respected principal, chief guest, teacher and my dear friends. I am deeply honored to stand before you today to express my gratitude for the blessing during this special ceremony. I am truly grateful for the well wishes and blessing received from all of you. I
I feel a mix of excitement and responsibility. This blessing ceremony is a reminder that we are not alone in our journey. We have support of our school, our teachers and our friends. And most importantly, we have support of our belief in ourselves. First and foremost, I want to thank our teachers who have not only imparted knowledge but also nurtured our potential with all-loving patience and encouragement. Their guidance has been instrumental in shaping our understanding and building our confidence. Their dedication and knowledge have ignited our curiosity. To my friends, thank you for the laughter experience we shared together. We have spent many wonderful years together, learning and growing. Thank you for all you have done. It hurts so much to separate because our souls are connected. I promise to carry all these blessings with me and striving to make the most of every opportunity and contribute positively to society. I am truly blessed to be part of this momentous occasion. Thank you so much. Good morning all of you, respected teachers, principal sir and chief guests. I am Somedha Nadia from class 10. I write a poetry for my teachers. Respected teachers, थैंक यू। शब्द बोलने से लेकर सब जोड़ने तक सिखाया आपने, जिंदगी का असल मतलब बताया आपने, हर किसी से प्यार जताना सिखाया आपने, असल मायने में तो इंसान बनाया आपने। आपकी हर डांट गलती पर पड़ी और कभी कभी बिना गलतियों पर, मगर डांट ने हमने गलतियां करने से डरना सिखाया, जिंदगी का हर चुनौती से निपटना सिखाया, कभी अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी किताबों को छोड़कर भी जीवन का पाठ पढ़ाया, कभी खेल, कभी संगीत और कभी संस्कृत को अपना सिखाया। मैं बहुत कम टीचर्स होते हैं ऐसे जो किताबों के अलावा बहुत कुछ सिखाते हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड आई गॉट सच टीचर्स इन माई स्कूल लाइफ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग टीचर्स। कुछ पल इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी नजर आते हैं। मिलते हैं तो पल भर के लिए, पर जब मिलते हैं दिल में हमेशा के लिए बच जाते हैं। सुप्रभात सभी को। आज स्कूल का एक ऐसा दिन है जिसे सभी को याद आएगा, और सभी मस्ती भरी पल और सभी टीचर्स की याद आएगा। कितना अजीब है ना, बचपन में हम रोते थे स्कूल ना आने के लिए, पर आज हम सब रोएंगे इस स्कूल से जाने के लिए। स्कूल की हर बात याद आएगी यार, चाहे वो लंच में शेयर करके खाना हो या फिर साथ में पनिशमेंट पाना हो, चाहे वो टीचर की ताने हो, चाहे फिर क्लास में बेसुरे सुर लगाने हो, ग्राउंड में धूम मचाना हो, या फिर बोरिंग क्लास में मैम मेरा सर दुख रहा है ये वाला बहाना बनाना हो, सब याद आएगा यार। स्कूल से आने से लेकर स्कूल से जाने तक का सफ़र सब याद आएगा यार। इस दिन पर हम टीचर्स को कैसे भूल सकते हैं। क्या कहूँ टीचर्स आपके बारे में, अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। जब आपकी अगर उपलब्धि बोलने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। बस इतना कहना चाहूँगा, न हर समंदर में मोतियाँ सदा खिलते हैं, न हर मंजिल में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, वही पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Class 10 will be blessed by the enchanting words and inspiring word by Sri Satya Pragyananda Ji Maharaj, who is the guest of honor for today's celebration. I request Sri Satya Pragyananda Ji Maharaj to bless our students. जय जगन्नाथ। आपण माने भल अछंती समस्ते। प्रथमे धन्यवाद जणेबी जे कि मते आसीबार शुभ अभिप्राय जणैछंती। प्रिंसिपाल साहब और ग्रामवासी अछंती एवं समस्त शिक्षक वृंद को स्वागत जणाउछि, समस्त कर्मचारी मान को मते स्वागत जणाउछि। आ मोर सम्मुखरे उपस्थित समस्त कुनी पिला माने आमे भी आपण भलिया दिने हेतिलु, आमे भी छोटिया हेतिलु, आमे भी स्कूल जाइतिलु, आमे भी कॉलेज जाइतिलु, आमे पाठ पढितिलु। श्रीमद् भगवत गीता केबे के पाठ करछंती? बहु कष्टर मुंडटे हलुछि, कारण बोधे पाठ करि नाहांती नहे। घर के पाठ करंती पिला माने? ठीक अछि। श्रीमद् भगवत गीता गोटे श्लोक कहते भगवान कृष्ण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव सौभाग्ये च पंडितः समदर्शिनि।
विद्या पढ़ी सारिबा परे आम मैंने गोटे टार्गेट नया हेबी बोलिकी नुहे किंतु चाणक्य नीति श्लोक चाणक्य लिखि ना विद्या ददाति सर्विस लिखि ना विद्या ददाति विनय विनय याति पात्रता पात्रम धनम आपनति धनम धर्म ततः सुखम नुहे विद्या ददाति चाकरी लेखा है ना विनय भाव परिप्रकाश हेले आमे समस्तंकर प्रिय होइजिबा बापा मां को केबे प्रणाम हेइचंती पिला माने हेइचंती धन्यवाद जा हो प्रथम गुरु होचंती हमर से नुहे दुनिया को आनिबार प्रथम मार्गदर्शक निज शिक्षक मान को केबे प्रणाम हेइचंती ना से सिस्टम नाही स्कूल रे अछि ना अछि शिक्षक पाखु घर को जाई सारिबा परे बही पाखु विरति नहीं सारिबा परे किछि समय घर परिवार मानक सहित देइचंती पिला माने कारण कहिबार तात्पर्य गोड़ बाजिले विष्णु हवा एटा कोनोसी क्लास रो बही रे लिखा है नाही लिखा है जी सुनी कि पिला माने कहउछ ना जा खुशी तो कहउछ अच्छा दी जन गुरुजन कथाबार्ता होता बेले सान पिला माने सेठी ठिया हुअन्ते एटा कोनोसी बही रे लिखा है नाही लिखा है गोटिए को ज्ञान कुआ जाए आ गोटिए को कांड ज्ञान कुआ जाए साधारण ज्ञान जोटा को नहीं कि आमे दुनिया रे फेस वैल्यू जोटा को कुआ जाए लोक परिचय रे परिचित आम माने होता सेटा को आमे घरु शिखिता नुहे विद्यालय को आसिले विद्या अध्ययन करथो विद्या अध्ययन कर सारिबा पर आम माने कोन शिखु विद्या विनय संपन्न विद्या विनय भाव रे संपन्न करा जाए धमके कि नुहे धमकेले विद्या हुएनी केते जनक सहित शत्रुता करा जाए नाही जहाँ शास्त्र कहती जड़े हेले शिक्षक आउ जड़े हेले डाक्तर आउ जड़े हेले वकील आउ जड़े हेले पुलिस नुहे आउ जड़े हेले सुपकार आउ जड़े आमर मरम जानिथिबा लोक पिला मानकर मरम जानिथिबा लोक किए तांको बापा मां मो पुओ कौन खाए मो झील कौन खाए मो पुओ कौन पिंधिया भल पाए मो झील कौन पिंधिया भल पाए सेगुड़ी जानी बापा मां नुहे सहित जीवन में शत्रुता कले कौन हम ना जीवन नष्ट हो ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सौभाग्य च पंडिता समदर्शिना कीट ठारू ब्रह्म पर्यंत सबुआडे भगवान का सत्ता अनुभव करवा केवल विद्या द्वारा संपूर्ण होता है से आम मैंने पाठ पढ़ू विद्या विनय द्वारा प्राप्ति होता है से विद्या अध्ययन करा जाए नुहे ना धमके किए पाठ पढ़ी आपण मैंने पिला माने धमकेले पाठ हुए तेणु विनय भाव द्वारा आम मैंने विद्या अध्ययन कर जदि आम सम्मान दे शिखि नथिबा तेबे आमर भविष्य रे आमे जदि किछि पदवी जिबा आम भी सम्मान पाइबा जीवन रे गोटाए थर आमे वर्ड शिखु नुहे अ आ हो कि एबीसीडी हो जीवन रे गोटाए थर आम माने समस्त शिखिजे जीवन जाक पढ़िबा आ पढ़ेबा नुहे कि निजको गोटाए थर मनीष गढ़े जीवन जाक गढ़े ना आपण भाबुवे जीवन जाक गढ़ा हुए सेटा भूल कथा गोटाए थर मनीष जाक निजको गढ़े गढ़ी सारिबा परे आमको देखि आउ किए गढ़ी हो जोगीर आत्मचरित बईटी जदि केतेबेले आपण माने पिला माने देखिबे जोगानंद परमहंस गोटे धाड़ी रे कहिसंती आमे तो दुनिया को परिवर्तन करि परिबा नाही आमे तो परिवर्तन होई परिबा ना आमर का ऊपर अधिकार नाही आमे वर्तमान आसीछु किछि समय आपण मानक सहित कथाबार्ता हेलु
शिक्षक मान सहित कथबार्ता हेलु पढ़ी आम काम आम व्यस्त रहू आपण मैंने पिला माने समस्त समस्त को पढ़ारे व्यस्त रहे जदि जीवन में गोटाए कथा को मनीष माने ताले जीवन परिवर्तन हो गोटे कथा को जीवन में मनीष माने जीवन परिवर्तन हो जमती गोटे सब्जेक्ट रे आम पीजी पर पीएचडी करू ठीक से टाइम जीवन में गोटाए कथा को जब आम मैंने मानिबा ताले आम जीवन परिवर्तन हो किंतु आम मैंने मानिबा प्रस्तुत नुहति कारण आम मन भितर गोटे अहंकार रूपक शत्रु सृष्टि होगी अच्छे जो अहंकार द्वारा आम कार के प्रिय हो पारती ना जो अहंकार द्वारा आम के कार प्रिय हो पारती ना कारण अहंकार भितर आम प्रथम शत्रु मनीषर 6टा रिपु 6टा रिपु मनीषर प्रथम शत्रु जे कि नष्ट भ्रष्ट कर दियंती सुंदर शरीर टाको नष्ट कर दियंती किंतु आमे माने ता भितरु केबे पसंदी नाही श्रीमद् भगवत गीता केतबेले समय पाइले पिला माने धाड़िए धाड़िए पढ़िबा अभ्यास करंतु धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्यव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय उवाच संजय कहउचंती ता माने सेतबेले भी इंटरनेट रो व्यवस्था थिला नुहे वर्तमान जो नेट टाक ऑन कर दौचे से इंटरनेट रो व्यवस्था थिला नले संजय केमिति कहउचंती दृष्टा तो पांडवानिकम बेउला दुर्योधनस्तत आचार्य उपसंत में राजा वचन में प्रवीण राजा मु देखुची कुरुक्षेत्र रे कोन होउची मु देखिकिरी कहउची ता माने तांकु भी से शक्ति प्राप्ति करा जायतिला सेतबेले भी इंटरनेट थिला अस्त्र होउची गोटाए धरिबा लोक होउचंती दीटा गोटे घातक देखिथिबे आपण जीव हत्या करी मांस बिके नुहे सी भी गोटे अस्त्र धरता है आउ गोटे अस्त्र ओटी भितर डॉक्टर धरता है ना जीवन बंचाए बड़ बड़ अस्त्रोपचार कर सारिबा पर ऑपरेशन कर सारिबा पर गोटे रोगी बंची जाए ता ना हला अस्त्र किंतु धरिबा लोक होउछंती दीटा तेणु आम मान हृदय आम मैंने स्थिर करवा आम कौन हवा फास्ट निजु प्रश्न पचार दरकार मु किए मुझा कर ठीक कर आम मानकर समस्त थार्ड आई अच्छी आपण भावे ना केवल भगवान शंकर अच्छी आम मानकर भी अच्छी आपण कहे केमिति पिला माने भावे केमिति पछपटे मशा कामुड़िला बेले किए दर्पण मिरर धरिकी मशा को मारती कि नहीं ना केमती जानती केमती आम मैंने समस्ते जानती ना मशा आमर पछपटे कामुड़िला किंबा आम शोचे निदे शोचे आम मुहर माछी बसला आम हाथटा छाँ छाँ एमती हो जाऊनी तार सेंसर व्यवस्था भी अच्छी आम मैंने जो पाश्चात्य देशर आभिजात्य को भल पाई केक कटा व्यवस्था करुचे सब जन्मदिन मानक नुहे आम केक काटुचे गोटे कोन टोपी पिंधुचे गोटे सुंदर कैंडल टाक लगे हाफ टू बिली कर लिभि जाऊ पुणी लगी जाऊ मैजिक कैंडल बिली कहते ना किंतु आम वेद से कहना आम महाप्रभु से कहना आम महाप्रभु कहते पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णरु पूर्ण गले पूर्ण भगवान राम जन्म होइतिले पिठा मिठा लड्डू भोग लागितला भगवान कृष्णचंद्र जन्म होइतिले से पिठा मिठा लड्डू कारण लड्डू समस्त देखिथिबे ना बुंदिया रे तयारी हुए बुंदिया बेसन रे तयारी हुए बुंदिया को पाग कर सारिया पर उठेइकिरी कारीगर तयारी करନ୍ତି नाही लड्डूटा देखिया को गोल ताको भांगी सारिबा पर मत जो दाना गुडा को बाहर से गुडा को भी गोल हो नै तेणु आमर माँ मान को जदि मुठाए चाउल दबा आम माँ माउसी कमुनी समस्ते से मुठाए चाउल रे केते प्रकार पिठा पणा कौन कौन तयारी कर देबे नै किंतु बड़ दुखर कथा पाश्चात्य देशर नारी माने किसी शिखी ना बा हेले के डिभोर्स के आउ थे बा हे के
ବିରାଡ଼ି କିଣିକି ଆଣିଲେ କୁକୁର କିଣିକି ଆଣିଲେ କେ सी जो बुढ़ा हो भल पाइबा एत स्लो पॉइजन इंजेक्शन भी देते सारा आमे माने आमर गोमाता देह खराब हेले वेटेरिनरी सेक्शन को जाऊ डाकू भारी मन दुख करू ये गाईटी मोर भारी भल गाई भल लक्ष्मीमतिया गाई किंतु फरेनर माने विदेशी माने केमती भल पाती जानते जो कुकुरटा काखरे जाके फटो उठाउथिबे जो बिराडीटा को गाड़ी आगे सीट आगे रखिकी बुलाउथिबे सी जो बुढ़ा हो से स्लो पॉइजन इंजेक्शन टी मिले ताकू दे दियंती सी मरिब मला भलिया ताकू जना पड़िबनी ये मालिक को जना पड़िबनी मो पाखरे गोटा किए थिला तार एब्सेंट मु फील करिवि ताको भल पाइबा भीतर केमता जिनिस देखंतु आज्ञा तांकरी कल्चर को आमे माने समझते कॉपी करूछे नुहे एगुडा सब अभिभावक मानक पई पिला मानक पई न तथापि सुनी था घरे जाई टिकि बापा मां को कहबो बापा माँ पिलार मंगल कामना करने उद्देश्य भगवान को पाखे प्रार्थना करती और मुंडिया पकाती नुहे किंतु आजिकल बापा माँ मैंने पिला मानकर आयुष को प्रति वर्ष गोटाए गोटाए वर्ष माइनस कर दौरान आम उत्कल परंपरा जगन्नाथ संस्कृति भितर बंटा संस्कृति आम संस्कृति ना है बंटा संस्कृति कटा संस्कृति नुहे कटा संस्कृति पाश्चात्य देशर संस्कृति की कटा संस्कृति बोली कहा जाए किंतु आम संस्कृति की बंटा संस्कृति कहा जाए आमे पिठा करिबा बांटीबा डालमा करिबा बांटीबा खीरी करिबा बांटीबा भोग आनिबा बांटीबा लड्डू बांटीबा मिठा बांटीबा तेणु आम संस्कृति बंटा संस्कृति पाश्चात्य देशर संस्कृति कटा संस्कृति आमे क्या अवलंबन कले पाश्चात्य देशर संस्कृति की अवलंबन कले से दिन मधु बाबू को विदेशर केते जण इंजीनियर पचार आज्ञा आपणकर ओडिशा रे तो भल भल इंजीनियर नांती ना हाँ आज्ञा आमर अछंती ना ओडिशा रे इंजीनियर अछंती ना हाँ आम ओडिशा रे चढ़ेईटा जा करिवो आपणकर बड़ बड़ इंजीनियर माने करि परिबेनी ना माने बाया चढ़ई बसा गोटा मधु बाबू देखेले विराट विराट इंजीनियर मान ना आज्ञा एटा कौन ना एटा हमर गोटा छोटिया चढ़ई ये बसाटा को तैयारी करिछि एमतिया बसा आपण मानकर इंजीनियर तैयारी करि पारिबे आउ से एते जानिबा पक्षीटी बसा भितरे काले सेफ्टी हो कौन से जीवाणु पशिले से गोबर टिके नागुर फंटरे आणिक रखे बाया चढ़े ए प्रश्नर उत्तर देते मधुबाबू आउ दवा लोक कहीं ना तेणु महापुरुष मान जीवनी मझे मझे पढ़तु भल भल स्टोरी जहाँ को पढ़ी सारा पर आमे माने आत्मचिंतन करवा ताकू टिके स्मरण करंतु पिला माने तेणु एथुरु स्पष्ट प्रमाण मिलला आमे माने आम जीवन को आम बापा माँ माने प्रति वर्ष माइनस करी जाउछन्ति प्लस करूना कारण आम उत्कल परंपरा रे 11 दिन हांडी जाए दीप लिभे ना तेणु आम प्रति वर्ष जन्मदिन दिन कैंडल लगे लिभौचे तामाने आमर आयुष जी थी प्रति वर्ष आम गोटा गोटा माइनस कर आम पाश्चात्य देश पर ढांचा कले हम ना कौन भल गुण आम आनबार अच्छे सूर्यंकर काम जलीय अंश बाष्पीभूत करवा इटा नहीं जीवेनि कि पत्थर नहीं जीवेनि तांकर काम है से तेणु आमर काम है जिते भल गुण गुड़िक अच्छी आम कलेक्शन करवा ऑब्जर्व करवा खराब को छाड़ा सेटा को आम जब करवा आमको चालाखिया बोली कहुव ना आम ठार बोका कहीं ना हौ आसतु जय जगन्नाथ 5 थर 7 थर नाम करवा मो सहित आप सहयोग करेंगे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जनरे एक कथा बुझे देले जे थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सब असर तेणु चरित्र बढ़िबा जीवनर मूल मंत्र तमे सुंदर चित्र अंक गीत गाओ किंबा अन्य कोनोसी पाठरे प्रवीण था एटार किछि माने नाही जदि तमर चरित्र रे गठन रे किछि त्रुटि रहि जाउछि तेणु
ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ନେବା ଏଇଥିରେ ସବୁକିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ ଏକଥା ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି କର୍ମ ହିଁ ସବୁକିଛିର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ନିଜ କର୍ମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିଚାଲ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମରି ହିଁ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇଆ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ କି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ତାକୁ ମୂଳ ନିଧି ବା ମୂଳ ଧନ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନାଉ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ for the special speech which will be presented by the pioneer of our institution and the best critic and the guidance of the institution, that is our principal sir Shri Arun Kumar Patel sir, to say few words regarding this ceremony and to guide our students for their better future. Sir. Respected Swami Satya Pragyanand Maharaj Ji, respected teachers, respected parents and all students. Today is the blessing meeting. All of you 10th class students must have been watching this blessing ceremony. Blessing ceremony means, you know, class 10th board exam is a very important part of the student's life and career. You are going to face the battle. Blessing means, so we all are with you. You imagine the same example I am citing from great Indian mythology, the Mahabharata. You imagine you are the warrior Arjun. Along with you, we all are present. And if examination is a war and your weapon is pen, that's a symbol. And prior to me, your teacher speakers and fantastically spoken by Swamiji regarding Indian culture, particularly emphasis on Jagannath Sanskruti, typical Odia culture, and it's important. Education is not writing an examination, passing, or you secure any marks. One thing I should say, we all are with you. Entire system is with you. This is the first batch of this school. I am really privileged to mentor you here. Though I came very late, almost fag end of the session. Still, I am trying my best with help of your teachers to guide you. You may think, what is the guidance? I will write exam. Hey Rani, it may be true, but one thing you should remember, proper guidance is required. Because you are in adolescent age. It is very easy to say, but difficult to do. That's why you should listen from the elders. And our blessing is always with you. Students from class 9th were, you can say, they were crawling at that time, and the students who are in class 10, they were running at that time in class 7. So now it's time to listen the words from the class 9 students regarding their elder sisters and brothers. So we will start the experience sharing with class 9 student Ishan Das. Teachers and my beloved brothers and sisters, today we are gathered here for the blessing ceremony. I stand here filled with emotions,
that lies ahead. To our esteemed principal and respected teachers, thank you for being our guide, mentor, and for believing in us, even in our hardships. Your dedication, wisdom, and experiences have not only educated us, but have made us become the better version of ourselves. To my dear fellow seniors, as well as we stand here on the brink of a new beginning. Together, just to take a moment to look back on the years that shaped us together. We have laughed, learned, and faced challenges ahead. We have celebrated these years with so many blessings. These experiences have made us together in ways that go beyond mere friendships. But we have sorrows in our heart that we lost our family members. And all the best for your examination and get success in your life. May God bless you with all your dreams. And I advise you to always become the better version of yourselves. Thank you. Now, I'll call Payal Sinha, another class 9 student, to share or to express her feelings for this particular day. Good morning everyone present over here, respected principal sir, teacher and my dear brothers and sisters. It has been a really long journey for all the class and students, and today is a day when you will be saying goodbye to your teachers and all the memories which you have created during this period of time. The class has been the most important part of your school life as you started from the room, whether it was a friendship, mistake, fun and many more. During the class, not only the students but the teachers also created many memories with all of you. Today, we all gather here for the blessing ceremony of our beloved classmates who are passing from the school. We really wish you a very happy and bright future ahead. We really hope that you all get success in your life, career and in your future. It was a really great experience with all of you as a senior. All you guys are really helpful and supportive. Starting from housekeeping to the annual sports, inter-house activity and every possibility. You guys are always there for us. From today onwards, you will be leading to your new life. At the end, I just want to say that there are so many opportunities waiting for you ahead. So just fulfill all your dreams and do what makes you happy. Feel good. Every moment of your life, never lose hope and always strive for something better and be better version of yourself in life. Hope to see you soon with success story. We'll miss you a lot. Thank you. Have a nice day. Sri Sri Satya Pragyananandi Maharaj ji, respected principal sir, esteemed teacher colleagues of this Vidyalaya, and dear students, it is, as has already been meant by Avinash sir, it is not a farewell meeting. We must distinguish farewell meeting from a blessing ceremony. This is for the first time that Odisha Adarsha Vidyalaya Sriram is going to appear in board exam. Your centers have already been fixed. As you know, yesterday Avinash sir texted it in the group. I have so many things to share with you, but I think I have been more frank with you in the classrooms rather than being in staff room or with other teacher colleagues. So I have not so many things to say on this podium, but I just need to tell you one thing. Always be disciplined, and education, we are not providing, or education is not meant for getting scores and grades, but rather education is that thing which builds our character. So we must strive forward, not only you but also I, because I have so many times said in your class 10 students and in other classes, we and we all belong to one place. In a kind of, we are one breed, kind of that. So all the best for your exam, but remember, we must always strive towards building the society at large. And your education doesn't
end here with going out of the Vidyalaya with passing marks, but it is actually the stepping stone. So I wish all of you all the best for your future, and let's make a better society together. I will also try to participate, and I will also try to partake in that way, in my way, and you will also join me if possible to make the society, our Cuttack, a better place for all the Katkiyas. Thank you. All the best for your exam ahead. Good morning, everyone. Respected guest of this occasion, respected principal sir, my dear colleagues and my loving students. Today we are observing this blessing ceremony for our class 10 students. We know this is the first batch of our school who are going to attend CBSE board exam, and we, the Vidyalaya, as well as the Cuttack Sabha block, is awaiting for the result of this batch, how they are performing, and the future of this Vidyalaya also waiting for your result, how you are doing. So students, first I will request you to be attentive towards and focus on your examinations, because the exam is no longer, it is knocking at our door, and we are preparing very well, I know it. Still then, as this is the base of our career, the future career, we are going to prepare from this class 10. So, totally we have to concentrate on our learning. And as a class teacher, though it was very few time for 3 to 4 months, I am very much proud to be a part of your achievement, your learning, lesson, as well as your life. And I will thank all of you for your cooperation with me and for the lesson. Students, after completion of the examination, we may not gather together because many students will learn in this Vidyalaya. We are going to open class 11. But some may leave this Vidyalaya, but the lesson, the experiments, what we have shared, it should be a memory for all of us, and what you have learned in this Vidyalaya, that should go with you and that should live within your heart forever. In the classroom, what we have discussed and what our teacher Abhilash sir and Ajit sir told you, that the basic aim of education is to build the characters, not to score more marks, because the country is waiting for you. You are the future of this nation. So let's be a good citizen of India, and also it is our responsibility to make a good career and good achievement. So today, I must wish you for a betterment in the coming examinations, and the blessing of all our teachers will remain with you for next chapter of your life. A very energetic good morning to all my dear students. A very good morning to all of you. I couldn't hear you. A very good morning to all of you. Good morning, sir. That's the energy. And today, we all, our entire Adarsha Vidyalaya Sriram is charged up because of the presence of, the divine presence of Satya Pragyananda Ji Maharaj, who has graced the occasion of blessing ceremony of our school. And today, the primary objective of having this meeting is only to bless our dear students. I would rather call it blessing ceremony. Many students are wrongly calling it farewell. It's not a farewell, it's a blessing ceremony. And bless our dear 10th class students who are going to
appear for their board examination very soon, which is knocking at the door. Therefore, I request all the students to maintain discipline and get the spiritual vibe, and let's witness this for the very first time. We are witnessing this grand occasion of blessing ceremony to our dear students. So let's give a big hand for this grand celebration of blessing ceremony.
Yay!